Jamnalal Bajaj Awards, acknowledged as possibly the most coveted recognitions, endeavors in areas of developing the socio-economic arena in our country, serve the ideals of Shri Jamnalal Bajaj and promote Gandhian ideologies in India and abroad. As a tradition, we begin this function with an invocation by Ms. Dhwani Pandya. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान ना आने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे. Welcome to everyone to this 35th awards function of the Jamnalal Bajaj Foundation. Awards शुरू हुए 1978 में with 2 awards, Constructive and Application of Science to Rural Development. कुछ दिनों बाद जो जानकी देवी जी बजाज के नाम से अवार्ड था, Focused on Ladies for Uplift of Women and Children, और उसके कुछ सालों बाद चालू हुआ the International Award, जो कि फॉरेन नेशनल को दिया जाता है फॉर प्रोपगेटिंग Gandhian views, Gandhian values abroad. Friends, as you know, we are gathered here today to gratefully felicitate the awardees for having done such outstanding work, selfless work, and having nurtured their outstanding institutions. On behalf of all of us here, may I once again inform our awardees that the Jamnalal Bajaj Foundation considers itself honored that you have been kind enough to accept these awards. Thank you, ladies and gentlemen. We now commence the awards presentation. May I request Dhirubai Mehta, Chairman of Selection Committee for the Award for Constructive Work category, to read the citation honoring Shri Jayawant Matkar. समर्पित एवं निस्वार्थ स्वप्नदर्शी श्री जयंत मटकर के पर्याय है। श्री मटकर 60 वर्षों से अधिक समय से सर्वोदय आंदोलन के साथ जुड़े हुए तथा गोपुरी आश्रम के उपाध्यक्ष है। सन 1962 में अति उत्साही सर्वोदय कार्यकर्ता श्री मटकर ने ग्रामदान, ग्राम स्वराज एवं शांति सेना के स्वयं को प्रशिक्षित किया। वे अथक प्रयासी हैं और जरूरतमंदों के सेवा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। जमनालाल बजाज फाउंडेशन श्री जयंत गंगाराम मटकर को यह प्रशस्ति पत्र तथा रत्नात्मक कार्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार प्रदान करते हुए गौरवान्वित है। जिस कार्य के कारण मुझे जमनालाल बजाज फाउंडेशन का रचनात्मक कार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ, इसलिए मैंने सफाई, भूदान, ग्रामदान, गोरक्षा, खादी कार्य का विवेचन करके आपका समय लिया है। जमनालाल बजाज फाउंडेशन के पदाधिकारी और मान्यवर सदस्यों ने एक सामान्य कार्यकर्ता को इस पुरस्कार से सम्मानित किया। इस भावपूर्णता से इस पुरस्कार को मैं कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता हूँ। सार्वजनिक कार्य के लिए ही इस पुरस्कार का उपयोग होगा, ऐसा मैं अभिवचन देता हूँ। हमारा मंत्र जय जगत, हमारा तंत्र ग्राम स्वराज, हमारा लक्ष्य विश्व शांति। सबको फिर से एक बार जय जगत। Thank you, Matkar ji. Your simplicity and thoughts expressed right from your heart is indeed inspiring. Shri Madhur Bajaj, trustee of the Jamnalal Bajaj Foundation, may I now invite you to please read the citation in honor of Shri Kalyan Paul. Shri Kalyan Paul is a name to reckon with when it comes to promoting holistic mountain development programs in the Himalayan region. In 1992, Shri Paul established PAN Grassroots Development Foundation to perceive, initiate and implement fundamental ways and means for hydrology renewal and ecology restoration in Uttarakhand. Shri Paul encourages youth to be barefoot engineers to further create awareness and assist communities in adopting technologies through active engagement and course sharing.
to present this citation and the Jamnalal Bajaj Award for the outstanding contribution in the field of application of science and technology for rural development to Sri Kalyan Paul. Jamnalal ji was perhaps amongst those men of a shackled country who was inspired to play a significant role in laying the foundations for a free country. He was instrumental in evolving a coalition of interest amongst men and women to gain freedom, an endeavor in which his life partner, Janki Devi too, played a stellar role. In all likelihood, it is that spirit which still reigns amongst members of the Jamnalal Bajaj Foundation in modern India. On behalf of the grassroots team and all those who support our endeavors, I would like to thank the foundation for this award. This event would strengthen all of us in our resolve to improve the quality of life for communities in far-flung river basins in the Himalaya. And in that fashion, I think this is indeed a milestone. It would also be informed to mention and acknowledge the sterling contribution of two outstanding individuals who helped build up grassroots, Dr. Tim Rees and Sri Puran Namji, the former as an innovator par excellence and the latter as a super barefoot engineer who translated science and technology at the grassroots. And finally, I must bow to the tireless dedication of the grassroots team, some of whom had actually been here to celebrate this event last month, and further pledge to carry the torch of Jamnalal ji forward. Thank you all, and thank you, Honorable Justice Dharma Adhikari, for your time. This is indeed an honor which I would share with my grandchildren. गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की बात कही थी, इसलिए ग्रामीण लेवल पर हमको ग्राम स्वराज्य प्रस्थापित करना पड़ेगा। इसलिए वहाँ के लोगों की समस्या जाननी पड़ेंगी, उनको मदद करनी पड़ेगी, उनके साथ रहना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को रोजगारी देना, वहाँ की ज़मीन बचाना, पानी बचाना, संसाधन बचाना। और जमनालाल बजाज फाउंडेशन जैसी जो संस्थाएं हैं, उनके जो पुरस्कार मिलते हैं उससे हमको उत्साह मिलता है। मैं आगे जाकर ये पुरस्कार के बाद मैं इस काम पर ज़्यादा जोर देने वाला हूँ, खास करके पर्यावरण, सैनिटेशन, सेंद्रीय खेती और खादी ग्रामोद्योग। This kind of award is, I think it chuffs them a lot, it encourages people a lot. So that way, I think the entire team will be able to leverage an award like this to a large extent. It's sort of motivating, it motivates a lot of people.